Everyone, it's fine. Yes, sir. Thank you. So ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କାଲି କ'ଣ ପଢିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ। So ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲେ କି ଯାହା ବି ଅଛି ତାଙ୍କ all about the Jainism, including the birth and all the events that took place during his life cycle. First important point ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ born to whom Sudodana, the chief of that is the Republican of Sakya clan, as the Siddharth, in the name of Siddharth, that is the childhood name, in 6th century BC. That means 563 means 6th century BC. On Vaisak Purnima day at Lumbini, Nepal. So it take manako Vaisak Purnima day important, Sakya clan important, Sudodana, okay, the chief of that particular clan, and the childhood name was Siddharth, where Lumbini, Nepal, presently. Mother, okay, that is the Mahayana, just a few days after the birth, passed away. So death. And so that he was brought up by his stepmother Gautami. Stepmother Gautami. तो तांकर मां को डेथ परे है ना, सो stepmother तांकर जो मौसी थिले से तांको brought up करथिले. Then there were 32 bath marks thila on his body. उनका body रे देखिबा कोन 32 bath mark thila जाकू Brahmins माने predict करूथिले, or it was predicted by the Brahmins that either he would be the world conqueror or renouncer. तो एटा गोटे predicted करा जाइथिला कि Brahmins माने by looking to his body and the 32 marks. तो सत्य पे से माने predict करथिले. And so they predicted, and the thing also went as per the prediction. तो जदि हम देखिबा, then he renounced the world, सेटा में देखि परिबा conqueror नथिले. बुद्धा को कोन कहा जे लाइट ऑफ एशिया बोली कहा जे, एटा भी हम कल डिस्कस करथिले. ए जे तमरो इंपोर्टेंट खाली वर्ड गुडा में डिस्कस कर जुचे 32 मार्क्स थिला तांको बॉडी रे. आ मेंस रे तो क्वेश्चन आसीबो नै तुमको. He believed, or he lived, मतलब by the time he had lived a luxury life and comfort, कारण तुम देखि परिबो, as he was born to the chief of the Republican of Sakya clan, obviously will have a good life. और ध्यान से मन रखिबो, सोसाइटी को सही माने रिफॉर्म करि परिबे, सोसाइटी रे से माने चेंजेस आन परिबे, those who are strong person in the sense what, those will have power. Without power nobody is going to listen you. Let's say Modi, let's say Indira Gandhi, those who are the strong prime minister, they are known for their remarkable changes in the government policies as well, and for their strong decision. Like that, the strong person सबुबले मन रखिबो, always strong and knowledge, जो माने knowledge स्थांति person, they will be listened by the people, otherwise बाकी लोगों को के सुनिबे नहीं. So like that, it also in case of Gautam Buddha, जेहेतु से गोटे स्ट्रॉन्ग फैमिली रू बिलोंग करूथिले लोक, ऑब्वियसली प्लस तांकर जो ऑब्वियसली नो डाउट फॉर हिज एक्सीलेंस एंड तांकर जो आइडियोलॉजी थिला, जहाँ भी हो तांकर कंफर्ट लाइफ को से छाड़ी देथिले. Then he married to Yashoda at the age of 16 and had also son in the name Rahul. तांकर son थिले Rahul, Yashoda wife, married he got married at the age of 16. Then at the age of 29 left home in search of what? Truth. Then आम देखिबा जेतु से घर छाड़ी की गले खास सहित along with Chana के थिला the chariot, जे रथ चलाउथिले, and his horse name was what? Kanthaka. बुझ पछ एटा मन रखो, एटा पछारे चाना किए जे तांको नेई की जाइथिले जेतु से घर छाड़ी की गले, आ जो रथर ना थिला कंथक. For the 6 long years in search of the truth, जोटा कि हम कहबा the great renunciation, that is महाभिनी शक्य क्रामन. तो जोटा कि से पूरा वंडर करबे 6 वर्ष खाली here and there he will wonder. Then he first mediated with, that is Alara Kalama and Udaka Ramaputra, that is
Ramaputta, sorry. So ମୁଁ ଏ ଦି ଜଣ କାଲି କଥା କହୁଥିଲେ, କାଲି discuss କରୁଥିଲେ, and they were the teachers of the times. So when he came across these two people, he was not satisfied, and then he left. Then he will what left that place and moved to the other, in search of the other teacher as well. Then Buddha later joined the five wandering, that is, aesthetics. Ascetics. Okay, ascetics means others people, those who are also uh, believe in like principles, religion, etc. Then Asaji, that is Mahanama, Bhapa, Vadya, and Kondana. Kondanma. Sorry, this is double A inside. Just a minute. It's double N. That is Kondana. So ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, join କଲେ. They were also the but like they were also looking for the truth. Then ସେ ତାଙ୍କ body କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, austerities until his body was almost, that is what, emaciated, and realizing the austerities could not lead to the realization, and he left them. ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି जो ज्ञान प्राप्ति ଏଇଟା ବି ଉପାୟ ନୁହଁ। ଆଙ୍କୁ ବି finally he मतलब he was not satisfied with these people, and he left the place, nearby region को पଳେଇଯିବ। nearby region ରେ କ'ଣ କରିବ ନା, he moved towards a village nearby region, that is the Senani, and took a seat under the people tree. People tree जोटा कि ईस्ट फेसिंग है कि से बसिबो पीपल ट्री पाखरे, सनानी विलेज। ए विलेज टा प्रिलिम रे पचारे, एटा भी मन रखबो। जहां भी तुमरो कीवर्ड सब हाइलाइट करा जाईची, जेंति सनानी टा हाइलाइट हेनी, बाकी कीवर्ड सब हाइलाइट करा जाईची। Then he resolved not to rise until the enlightenment was achieved. चले जे पर्यंत से जो महाज्ञान प्राप्ति न होची से जन से उठिबे नहीं, resolved. As Gautama sat deep, that is the meditation, Mara, the lord of illusion, tried to distract him, ताको distract करे अपनी चाहिए, but से तरह से सफल होगा नहीं. And finally Mara was happy with the behavior, with the compassion showed and transformed by the by the Gautam जो तांकर जो compassion transformed the demon's weapon into the flowers बोली कुहा जाए। जेतବେଳେ से ध्यान मग्न रे थिले, जो मारा जोटा कि द लॉर्ड ऑफ इल्यूजन से चाहूतले डिस्टर्ब करे पई तांकर डेमन्स मानको पठौतले वेपन्स नै कि तांको डिस्टर्ब करो, बट तांकर लॉ ऑफ कंपैशन, दैट पावर transformed the weapons of demons into the flowers, believe करा जाए। So Mara and his army fled, है ना। तापर से माने कोन कले, in disarray, that से माने बुझ पड़तो, they were inside or they were disgraced. At the age of 35 he ultimately attained the nirvana, enlightenment. एटा टिके मन रखो, at the age of 35 attained the nirvana कोठी बा जोटा कि enlightenment at गया, मगध। गया कोठी होची obviously बिहार, मगध, अंडर ए पीपल ट्री जाको बोधि ट्री कहा जाए। एबे भी से बोधि ट्री होची, है ना, जोटी बोधि टेंपल होची तमरो, है ना। On the bank of river Niranjana, this is super important point, ये point बहुत important, river what, Niranjana, गंगा बोली लिख दो बनी। So Buddha finally got the enlightened, or the enlightenment he achieved there in Gaya, जोटा कि मगध बिहार में से पुराना ना थिला बोधि ट्री और रिवर निरंजन 35 एज एज वो में कल देखिथिले। It is believed Ashoka's queen, that is what envious of the Bodhi tree. Bodhi tree को से बहुत थोड़ा damage करे अपनी चेष्टा करचंदी, try to kill that, but it grew again and again. So many times, many people cut down the tree in many times, but it grew again and again at the same place till it revered by the Buddhist. जे पर्यंत बुद्धिस्ट monk माने तार value को न जानी परचंती और respect न करचंती, से पर्यंत से जमती से गछ मरी नथला। And finally it was it got respected from across the different section of the community. Then as what tankar fast teaching by sermon, fast daily
Buddha delivered his first sermon on the deliverance from the suffering to his 5 farmer compassion at Sarnath. এটা মনে রাখো কোউঠি ଦେଇଥିଲେ ফার্স্ট টিচিং যাକୁ sermon କୁହାଯାଏ ସାରନାଥରେ ଦେଇଥିଲେ। The event also known as Dhamma Chakra Pavarthana, ये बहुत important फास्ट sermon को कुहाଯାଏ the wheel of dharma. The Buddha wandered for over 4 decades, established and what order of monk and nuns known as the sangha. तापर कौन कला गोटे establish कले संघ जो थे कि monks और non माने आसीबे। They will have debate, they will have exchange of knowledge, order of monk and nuns. So that order of monk and nuns कौन करबे ना सेमान को भीतर exchange of ideas के what they have learned, where they went wrong, etc. so on and so forth. They will discuss that संघ टा टिके मन रखो कारण ये बहुत important word संघ। बाकी मु सेथरे देई देछि तमरो जो स्मॉल नोट है। अच्छा मते टिके रिमाइंड कर दवा जी मु सेटा तुमको देई दे स्मॉल नोट मोर मन नहीं खाली दवा पाई जो प्रीलिम स्पेशल नोट मु देई देबी। He attained parinirvana at the age of 80. ध्यान से देखो parinirvana and nirvana, two different things. Nirvana means enlightenment, and when I say parinirvana means end of life. Okay, Koti Malas. Malas what? That is the Kusinagar. At Kusinagar, this is very important. That means Koti janma hoitile au Koti morele. Where did he born? Anyone? Lumbini. That is Nepal, presently in Nepal. है ना। सो सेमती कुशीनगर रे तांकर कोन हला डेथ हे गला जति हमें देखबा जहा को हमें कोचे परिनिर्वाण दैट इज मालस। एटा गोटे किंगडम थिला that time national state नथिला काली भी हम डिस्कस करथले देयर वाज नो national states, so there was some small kingdoms around the Gangetic plain चारियाडे थिला। then हम देखबा 5 forms that present Buddha, 5टा फॉर्म। एटा बहुत इंपोर्टेंट, बहुत थोड़ा पचारछि प्रीलिम रे। तांकर बाथ को कौन सिंबल, तांकर बाथ जेतळे हैला सेतळे बिलीव करा जे तांको मां कोन देखिथिले पद्म, है ना। स्वप्न रे मतलब साधारणतः कहंती के बाथ पूर्व तांको मां को एटा देखाइतला। रेनाउंसिएशन जेतु से घर छाडी की गले हॉर्स घोड़ा सहित जो रथ थिला कांथक, है ना। आउन तांकर चैरिएटर थिले तांको चाना चैरिएटर ताको से नहीं की जाइथिले। देन जोठी से कोन कले महाबोधिनी जोटी से नॉलेज प्राप्ति कले बा एनलाइटेड हेले सेटा हला बोधि ट्री। देन धर्म चक्र जोटे धाम चक्र प्रवर्तन सॉरी फास्ट सर्मन जोटा कि तमे जानचो आर्ट वेयर दैट इज सारनाथ। देन फुटप्रिंट दैट इज द निवाना, है ना। निर्वाण हमें फुटप्रिंट। तो ए हमको सिंबल्स वो निवाना रो कोन सिंबल एमती सिंबल्स से पचर परंती। देन गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म फटाफट हम खाली रिकैप करदबा। कॉनिकल टेक्स्ट एंड नॉन कॉनिकल टेक्स्ट आर खाली हमें डिस्कस करथले कॉनिकल और नॉन कॉनिकल टेक्स्ट विथ डिफरेंस कोन। कॉनिकल टेक्स्ट कहले बिलीव टू बी द वर्ड ऑफ ओरिजिनल वर्ड ऑफ बुद्धा एंड नॉन कॉनिकल मींस नॉन ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ बुद्धा माने बुद्धा का डेथ पर जे माने जहां लिखिसंती तो जो उथरे की टाइबेटियन लिखिसंती, चाइनीज माने लिखिसंती, अदर लोक माने बहुत सारा लोकंकर कंट्रीब्यूशन रही छी। कनिकल तो कनिकल टेक्स्ट को कोन कहे ना टिपिटकस, ध्यान से मन को एटा कहे टिपिटकस। और नॉन कनिकल्स हमें आगु को देखबा। नॉन तो देन हमें देखो महावास्तु written in Sanskrit by mixed way. It's about the sacred biography, that is the what that is hagiography of Buddha. Then that is निदान कथा जोटा कि मतलब जो लाइफ स्टोरी तांकर बुद्धांकर फास्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी। देन दीपा भंस and Mahavamsa, both in Pali रे लिखा था, both given the historical and mathematical account of Buddha's life। जो तरह के बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका जो मैंने पहुंची थे, लेट्स से व्हेन अशोका वाज कन्वर्टेड बुद्धिस्ट काउंसिल तो सही समय जो बुद्धिस्ट मॉन्क बने थे से मैंने आपको देते। तो दीपा वंश एंड महावंश बोथ पाली रे लिखा जाइथिला, गिवन द हिस्टोरिकल मैथमेटिकल अकाउंट ऑफ बुद्धा's लाइफ, बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका and arrival of Buddhism to the Sri Lanka। कहले साधारणतः हमें हिस्टोरिकल अकाउंट हमको देखिया मिलिबो केमती बुद्धिज्म स्प्रेड कला कोन कला ऑल अबाउट दैट। निदान कांत इज कनेक्टेड द लाइफ स्टोरी। देन ए रहबो तमरो तांकर बुद्धांकर
sacred that is what hagiography of Buddha ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ଟର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ପଚାରେ। ଦେନ୍ ବିଶୁଦ୍ଧି ମାର୍ଗ ଯୋଉଟାକି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍, ଦ ପାଥ୍ ଟୁ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍। ଦେନ୍ ମିଲିଣ୍ଡା ପାନ୍ହୋ, ଏଇଟା ବି କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ତମର ଡାୟଲଗ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ମିଲିଣ୍ଡା ଦ ଗ୍ରୀକ୍ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର କିଏ ଥିଲେ ଆମର ନାଗସେନ, ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଡିସ୍କସ୍ ଥିଲେ, ତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁକ୍ରେ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେତି ପାକାରନ୍ ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ, ଯୋଉ ଟିଚିଂସ୍ ବୁଦ୍ଧାସ୍ ଟିଚିଂ କନେକ୍ଟେଡ ଟୁ ଦ account of the Buddha's teaching. So these are the some keywords ताकू मन रखियो prelim पे। Then apart from that Tipitakas जोड़ा क्या में canonical text बा original text को क्षेत्रे कौन आसे ना गोटे रेबा Tipitakas जोड़ा कि पाली रे लिखा है चीज़ एटा कि मन को एटा तुमको संस्कृत कर दिया अंते साधारणतः ऑप्शन रे, तो so that भूल ही जाए। त्रिपिटक एटा संस्कृत रे लिखा है इतला, but Pitaka's टा जोड़ा कि हमें Tipitakas, त्रिपिटकस और टिपिटकस टा संस्कृत और त्रिपिटकस टा होची संस्कृत रे लिखा हैतला ना। दीटा भितर डिफरेंस कोन ना, एटा कॉनिकल टेक्स्ट, एटा नॉन कॉनिकल टेक्स्ट, ये होची डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखिबा ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म ना। त्रिपिटकस को जदि हम देखिबा, त्रिपिटकस कंप्राइज ऑफ दिस थ्री बुक्स, तीनटा बुक्स, गोटे हिला द सूत, विनय एंड अभिधाम, ए तीनटा बुक को नहीं कही हमरो त्रिपिटकस ना। सूत कौन कहे टीचिंग, दैट इज द कन्वेंशनल टीचिंग, डिसिप्लिनरी कोड, विनय एंड अभिधाम मोरल साइकोलॉजी। तो ये तीनटा बुक को नहीं कही हमरो त्रिपिटक, तेणु ये तीनटा बुक टिके मन रखो, ये तीनटा बुक को नहीं कही त्रिपिटक। देन एज पर सूत दैट इज व्हाट पिटक द बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, मतलब डिबेट जदि आम कह सूत पिटक। विनय कौन कही डिसिप्लिन बास्केट एंड अभिधाम दैट इज द हायर टीचिंग, यार मीनिंग सब दिखाई। दिस थ्री बुक्स कंप्राइज ऑफ द थ्री पिटकस ना। सूत पिटकस कौन कहती, these texts are known to the Buddha's what, that is the भाकाना or the word of Buddha, मतलब original बुद्धांकर जो debates जहाँ कहते various doctrines dialogue form है ना, was written by the Anand in the first Buddhist council। बस एटा को मन रखिया पड़े, first Buddhist council रे सूत पिटक किए लिखिथिले आनंद। विनय it was first Buddhist council again है ना। जातक बातांकर birth studies written by उपाली को लिखिथिले है ना। डिसिप्लिन बास्केट जहाँ जमते संग, जो संग आम देखी संग रे किए किए रहिबो नॉन एंड मॉन्क्स, तो से मानकर ऑर्डर कौन रहिबो, हाउ दे विल परफॉर्म, व्हाट वुड बी द लाइफस्टाइल, व्हाट वुड बी द डिसिप्लिन दे हैड टू फॉर्म दैट टाइम while residing or while remaining in a sangha etc and so on। तो सेमक रिचुअल्स कौन रहिबो ये सब ऊपर। देन अगला बास्केट ऑफ हायर टीचिंग्स, दिस कंटेन्स ये थॉरो स्टडी ऑफ द that is what systematization of the teaching Sutta Pitaka through the summaries। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल लिखा है written by उपगुप्ता, ताकू शॉर्ट नोट बनई दबो। देन एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म रो डॉक्ट्रिन्स हम देखबा। डॉक्ट्रिन से थिला कोन ना तांकर गोठे तो हम देखिथिले, दैट इज आर्य सची, दैट इज द फोर नोबल ट्रूथ एंड आम देखा 8 फोल्ड पाथ। देन आउ गोटे रहा तुम मिडिल पाथ, गोटे रहा सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, देन आसब आमर निबान। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस आम देखा, दीज आर द कोर ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। कोर ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स आम देखा प्रथम 4 नोबल ट्रूथ, तापर 8 नोबल जो 8 फोल्ड पाथ, आगे 4 आम देखी दैट इज द व्हाट नोबल ट्रूथ। पूर्वर टी देखी दिया, दैट इज द 3 पिलर्स ऑफ बुद्धास टीचिंग। गोटे है बुद्धा द फाउंडर टीचर, देन धाम टीचिंग एंड एज संग। संग तो ऑलरेडी आम पढ़ीचे, दैट इज द संग जो माने के माने कहते जो माने कि उपासंग है तुम जो नॉन्स मान को ये रहिबो 3 पिलर्स ऑफ टीचिंग संग धाम बुद्धा ना। 4 नोबल ट्रूथ कौन, दुख, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग कौन, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग से कौन कहते, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग दुख कहले कौन एक्जाक्टली अकॉर्डिंग टू बुद्धा, आज पर द बुद्धिज्म एवरीथिंग इज सफरिंग।
है ना सब इट्स रेफर्स टू द पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस द पेन if you are feeling pain. Okay, and not only the actual pain, sorrow experienced by an individual. Then as for samudaya, मतलब the truth cause of suffering. कले ये दुख तो कौन मतलब someone is feeling pain like that, mental है पर physical है पर. Then samudaya, but से दुख रा कारण कौन? That is the desire. दुख रा कारण होची desire. The main cause of suffering is the desire. Then nirodha. Nirodha करे तारो end of suffering केमती हबो. Now, the truth of the end of suffering, the pain and sorrow can be ended by the attainment of what? Nibbana means the actual knowledge. Then as per the truth path leading to the end of suffering. That I mean, Astangika. Kale how to end that suffering. ताकि हम ताप होची 8-fold path. यदि suffering को खत्म करे पे होची ताप हमको 8-fold path. ना 8-fold path रे देखि दियो. Right view सब तो right common रहिबो. Intention, speech, action, livelihood, mindfulness, effort, concentration तारो गोटे meaning दिया जी. जेमति कि knowledge of truth, right view, right intention, free your mind of evils. मतलब खराब चिंताधारा किसी करिबो नहीं. Right speech, say nothing that hurts others. काकू मतलब हट तो लावले किसी को नहीं. Work for the goods of others. Right action माने समस्त पे भलो काम करिबा. Respect life. Right livelihood means respect life. Right effort, resist evils. Then practice meditation. Control your thoughts. So these are the 8-fold path to attain the nirvana. In addition to this, monks, nuns were strictly instructed to observe the following additional, that is, precepts. Additional precept कौन था? जमते कि avoid of eating after the midday meal, refrain from any sort of entertainment that used to ornament or to adorn oneself. मतलब ornament भी तुम्हें पिंदी बोने. मतलब लोभो रही बोली. Refrain from using the luxurious goods and services जब हो. Buddha also established the code of conduct. Code of conduct kono? Now don't commit violence. No violence. No covet for the property. No indulge in the corrupt practices and the sensual behavior. Don't speak lie. Don't use intoxicants. So these were some other guidelines. जो दिया मैं देखिबा, है ना? Then Buddhist council भी हमें देखिଥିଲେ. For major Buddhist council, fast council. The council रो background कली कहितली जो तमरो Buddhism divide हिजबो काहे कि divide हैला Buddhism के Buddhist council काहे कि असला कारण बुद्धांकर death परे obviously Buddhist council एथि पे हेतला कि what would be the course of the action. Buddhism को आगु को केमिति नबा आमी. तो ये सब ऊपर डिबेट होबा पई सेति पई सब जेते तमरो नॉन्स आसीबे monk आसीबे they will have discourse together okay, what kind of action, whether we will spread the Buddhism, whether we will need some reform in the Buddhism, how to revive the Buddhism, how to survive the Buddhism, like this all the debate. That is why council were that is what conveyed. The council को एथिमें डोका जाउथला. The first council after soon after the Mahaparinirvan. Mahaparinirvan means what? Death. है ना? बुद्धांकर. That was 483 BC. अच्छा मु आर टाइमलाइन कहतली Buddhist council used to be held after what gap? Anyone? 100 years. 100 years. Thank you. So usually 100 years रे थरे Buddhist council होतला. तो first council किए करेथला अजात शत्रु. जानिछ अजात शत्रु को, है ना? अजात शत्रु को region को rule करूथले. Anyone? Obviously no doubt Magadha, है ना? Presided by Mahakassap, a monk. मु सबले कहितली कि काली भी यार लॉजिक बुझेतले कि राजा ही सबले कन्वे करिवो बा राजा ही काउंसिल को डाकिवो कारण राजा पाखरे पैसा अछि. राजा कथा लोक सुनिबे. राजा कैन अरेंज द सभा, है ना? और सेथरे प्रिजाइड किए करबे जने monk करबे. ऑलवेज राजा तो प्रिजाइड करबे बिकॉज़ राजा does not have such kind of expertise in that particular what Buddhism रे हमें कहबा. सेते पे महाकश्यप गोटे monk सबले monk ही प्रिजाइड करिवे. जने कोन रहिबे जे कन्वर्ट करिवो त राजा ही डाकिबे. जब council was held in that is Satapani cave Rajgriha, one of the oldest cave of India. एटा मन रखो. ये केव बहुत थर पचारिछि को केव रे कारण सेतबे एमती बिल्डिंग स्ट्रक्चर नथला. They will obviously look for the certain kind of platform where they will sit together for the
at least 1-2 days or the 7 days तो राजगृह रे इथला जोटा सतपानी केव एटा टिके मन को द काउंसिल वाज हेल्ड with the purpose of जोटा की preserving जोटा मु तुम कहउथली और कोन पे करा छबो काउंसिल डका बाय पे how to preserve what the necessary rules to maintain so that the monks and the nuns they will also contain their desired etc so on and so forth and the desired target of the Buddha can be fulfilled. During this council the teaching of the Buddha were division into थ्री पिटकस पिटकस जोटा कि हमें देखे थे थ्री पिटकस है ना एक थ्री पिटकस हमें ऑलरेडी देखे साइड से 3 बुक्स सेकंड काउंसिल हेल्ड इन वैशाली by the king that is what Kalasoka the second council Buddhist second council Kalasoka करथले देखि दो तुम टाइम स्केल that is the 383 BC 383 BC रे से करथले जस्ट अ मिनट So I was here in second council that was held in Vaisali. The village in Bihar, obviously the patronized that king. Who was the king? That is the Kalasoko, who conveyed this council, second council, obviously. Let's say, council, let's say some sort of rift arise from the first council that would be resolved in the second council. So that is why frequently, let's say first council, it was 480 483 BC re first council haitila. अजात शत्रु जदि आम देखा ना 100 वर्ष गैप मु कही नेक्स्ट आम दैट मीन्स 383 रे नेक्स्ट काउंसिल आसिला तुम 100 काउंसिल इयर्स रे ना कौन थाए लेट्स से फर्स्ट काउंसिल रे किछि जिंस रिजल्ट हेई पालानी किछि कन्फ्लिक्ट थिला ताकू सेकंड काउंसिल रे रिजॉल्व कराचिबो और जदि सेकंड काउंसिल रे किछि हेई पालानी किछि रिफ्ट हेतला ताहारे आमे कोन इंटरिम सभा सब बा इंटरिम काउंसिल लेट्स से देयर माइट नॉट बी 100 इयर्स 50 इयर्स 40 इयर्स आउ गोटे सभा से डाकी पारती जदि रिफ्ट सॉल्व न होला और किछि प्रॉब्लम अराइज हैला बुझि परछो तो सेटा सेमति किछि बट यूजुअली 100 इयर्स थाए जाबियो तो सेकंड काउंसिल हम देखला दैट इज द व्हाट किंग कोरशाला दैट इज व्हाट वैसल रेस्टर दैट इज द कालासोका द किंग कालासोका कन्वे करथिले and presided by what that is the Sawakami. Obviously the monk ही अब Sawakami जे तो पचा Sawakami किए थे obviously the monk. Who monk अब obviously the older monk. Obviously the older monk रहिबे and those who also come from where Sangha. एमने कोठु आसीबे Sangaru. Sangha कोन the group of monk and nuns रहिबे सेथरे. Then third council held 250 BC Patliputra under the patronage of Asoka, presided by that is the what Mogali Puta Tisa. So presided by obviously the monk. तो ये थी third council. Fourth council 72 AD Kashmir. That is what Kundalavana. That से टाइम रे किए तुम्हारा patronage किए थिला Kanishka. ये रहो तुम्हारा Kanishka. Presided by whom? Vasumitra. Well that is what Asvaghosa was the deputy. That means एटा मन को Vasumitra थिले presided by Vasumitra, conveyed or patronized by Kanishka. बस की वर्ड मन को where that is the Kundala ग्राम Kashmir जोटा मुकाली को थिले के Kashmir फाइल रे कथा भी कहा जाईची है ना that is what that is Asvaghosa जे तांकर डेप्यूटी थिले कुशाना एम्पायर कुशाना जानिचो जोटा कि Hellenistic art पाई जणा जे Buddhist art of Hellenistic. Buddhism was also divided here into two sects. That is why this council is the most important council. So Dita council adhika pachare first and fourth. Why? The reason is that after the first council completed, the Tripitakas came to exist, and the reason for the fourth one to be asked more frequently because of that was the recent. And from here the two sects emerged. That is name of Mahayana and Hinayana. And the debate was going on. So that time there was a debate whether the debate माने बुझा पड़िबो ना एटा ना कनेक्ट करि परिबोनी तो मु टिके फास्ट जाउ छेतबी कारण एटा हमें काले पढी सारी जे ओके सेतिबे जे माने काली नथिले बोली मते खाली अजधारे गोटे रिवीजन करिया पडुची हला तो टू सेक्ट्स थिले जोटा कि महायाना एंड हिनायाना तो एठी डिबेट चलला कि वेदर बुद्धा वाज ए गॉड और बुद्धा वाज ए सुपर ह्यूमन और द ह्यूमन लाइक दैट सो सम पीपल और द some monks they advocated के बुद्धा वाज महान मींस गॉड भगवान थिले सेति में महायाना जो माने कहबे बुद्धा वाज गॉड दो विल वर्शिप फॉर द आइडल ए माने कोन करबो आइडल वर्शिप करबो काने भगवान बा
तो आइडल पूजा हम कि बुद्धा कहते नो आइडल वर्शिप ही वाज अगेंस्ट दैट जदि तुम जान बुद्धिज्म वगैरह कौन पे आसला बिकॉज बुद्धा बिलोंग्स टू व्हाट क्षत्रिय फैमिली सो ही अपोज्ड दैट प्रीस्ट क्लास डोमिनेंस से अपोज करुले से भी कहते आइडल प्रैक्टिसेस हम ना ये प्रीस्ट मानकर डोमिनेंस को खत्म करने से चाहूले आउ ये माने कौन कले बुद्धा को महान करके भगवान करके गॉड करके आउ थे आइडल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करेंगे जोटा कि बुद्धा मना करते जहाँ भी हो and other section of that council that means the council fourth council which was held in 72 AD Kundal of Vana Kashmir they advocated that Buddha was a human. Buddha was not a god, Buddha was a human, so that is why that is Hinayana. That means those who advocate Buddha as a human they will be called as the Hinayana and Mahayana kole bujibaru difference. So emane kon karibe na Buddha ko they would not make the image of Buddha. Emane Buddha ko image ko banaiba nahi. They will go for the idol, they will go for the image, but they would not. Now Buddha put one difference ta. Okay. Now comes to the here I was here. Now 8 मते स्टार्ट करे थिला तो एटा मु तुमको कहतली बेसिक डिफरेंस हिनायना एंड महायाना भितर डिफरेंस कोन ए माने आइडल प्रैक्टिसेस करिवे दे विल व्हाट दे एडवोकेटेड दैट ही वाज अ गॉड ओके तो ये माने कबे नहीं से जन ह्यूमन थिले बस मतलब ही वाज वेरी नॉलेजियस पर्सन माने ऑलमोस्ट जहां कहते सुपर ह्यूमन थिले तनो हमें आइडल प्रैक्टिसेस वगैरह नो इमेज नो आइडल है ना ये गुड़ा आम करवा ना कहीं बुद्धा निजे भी कहते कि मोर आफ्टर द पासिंग ऑफ और आफ्टर द डेथ डोंट गो फॉर द आइडल प्रैक्टिसेस. Now here I was here yesterday, so the different mudras in Buddhism. Now mudras kale kon the posture, simple, that is the posture and the gesture. I will say what posture and gesture. The mudras are non-verbal mode of communication. ये बहुत important. Non-verbal mode of communication, that is the communication and self-expression. Buddha तांकर different mudras रे expression करन्ति consisting of hand gestures and the finger posture. এটা हमको देखिया मिलियो. For example, गोटे गोटे हमें मुद्रा देखिबा केते टाइप रो मुद्रा थेला सब मुद्रा में देखिबा. They are symbolic sign based finger pattern and what that is that taking the place but retaining the efficiency and spoken word and are used to evoke in the mind ideas symbolizing the divine power of the deities themselves. So that comes to the different mudras. First mudra, Dharma Chakra mudra. Here you can see the image of Dharma Chakra mudra, how the posture and the gesture. See here how the finger and hand position. You can see the hand and finger position on this particular figure. Okay, so ये कौन the wheel of dharma that indicates what? That means the wheels of dharma. Mudra symbolizes one of the most important movement of the life of Buddha. It is occasion when he preached to his compassion the first sermon after his enlightenment, Deer Park at Sarnath. Sarnath mu तुमको कहछि यूपी. तेणु फास्ट जो सरनाथ दौले ना से टाइम रे जो व्हील ऑफ टीचिंग ऑफ धर्म से समय रे ये जो पोस्चर थिला दैट इज द व्हाट धर्म चक्र मुद्रा. मुद्रा रे जदि हम देखबा इन दिस मुद्रा थंब इंडेक्स फिंगर बोथ आर टच्ड एट देयर टिप. इंडेक्स फिंगर आउ थंब को कोन कहूची से टच करूची टू फॉर्म ए सर्कल जमते हम एठी जस्ट मिनट. हियर यू कैन सी a particular figure तुम देखि परिबो this two finger. Here you can see these two finger, that index finger and thumb, they are connected so that making a circle. देखाउछि everyone circle. Okay, so hope this one is visible to all everyone. Okay, तो ये then wheel of dharma ये देखि परिबो तमरो जोटा कि हमरो मेटाफिजिकल टर्म कहा जाय the union of method and wisdom. तो ये पचारे तुमको के तांकर जो व्हील ऑफ धर्मा जेतले से फास्ट सरमन डिलीवर करथले से समय तांकर मुद्रा को मुद्रा रे से बसिथले दैट इज द व्हाट धर्म चक्र मुद्रा. एमती पचारे तुमको लागिवो यार उत्पटांग क्वेश्चन obviously no doubt it लागिवो ही लागिवो so that we need times and again the revision
आउ किसी दरकार नहीं. 3 remaining fingers of the 2 hands remain extended. सेमानको किसी ए नहीं. यदि हम देखिबा, the middle finger represent the hearers of the teachings. The ring fingers represent the solitary realizers, and the little fingers represent Mahayana, the great vehicle. ये तमे देखि पारियो गोटे गोटे मीनिंग दिया एटा बहुत डिटेल रे दिया एते डिटेल दरकार नहीं, बट यस फॉर द नॉलेज यू कैन रिमेंबर. 3 extended fingers, left hand ram देखियो symbolize the 3 jewels जोटा कि बुद्धिज्म, namely बुद्धा, that is the what, dharma and sangha, जोटा धामा and sangha. ध्यान से सुनो, again I repeat, जो लेफ्ट हैंड रहिला तांकर जो अदर्स जोटा कि हमर जाको 3 jewels बुद्धा टीचिंग रो आमे पढिथिले. बुद्धा टीचिंग रो तीनटा जो पैरामीटर्स होची बुद्धा बा टीचर और बुद्धा निजे, देन धाम, धर्म एंड संग, ए तीनटा थिला. ये तांकर लेफ्ट हैंड सिंबलाइज करूची. द मुद्रा इज डिस्प्लेड बाय द फास्ट, दैट इज व्हाट, ध्यानी बुद्धा. ये रहइबो तुमको मन रखिया पड़िबो. दैट इज ये पूरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हमें डिस्कस करते. लेफ्ट हैंड कोन प्रेजेंट करूची, दैट इज द 3 jewels ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज बुद्धिज्म रो टीचिंग रो बेसिकली. आउ ये तुमको कौन करूची, दमते सॉलिटैरिटी, रियलाइज, हियरर्स, ये सब देखा होची. ना व्हील ऑफ धर्म जो हमरो दीटा इंडेक्स फिगर्स आउ थंब को जॉइन करूची. कोठी तांकर फास्ट जोटे सारमन आसला सारनाथ, जोटा कि डियर पार्क, एटा बहुत थोड़ा पचारी छी है ना. तेणु करके ये सब इंपोर्टेंट कीवर्ड्स गोटा तुमको मन रखिया पड़ियो. नेक्स्ट भूमि स्पर्श मुद्रा. नेक्स्ट मुद्रा होची भूमि स्पर्श मुद्रा. भूमि स्पर्श means touching the ground. So touching the ground, here you can see in this image how the hand is, here you can see that touching the what, soil, or I would say the that is the what, earth, touching the what, earth, that means hand portion देखो. So right hand सबले ध्यान से रखो, जत्ते बेले भी तमे लेखुछो कोनो, whenever you are going for the mudra, always mention that is the right hand fast. Right hand जो posture तारो जो gesture of the finger, that is most important than the left hand always. So basically I mean जत्ते बेले भी all the mudras we are talking about basically the right hand fast. So that things you have to keep in mind. The Bhumisparsha mudra, Bhumisparsha translated into the touching the earth. What touching the earth? It is more commonly known as the earth what witness. तो ये तुम पचरो earth witness बा Bhumisparsha mudra. यदि हम देखिबा तंकरो ये कोठी मिले कौन देखिबा. This mudra formed with all 5 fingers. ध्यान से देखो, all 5 fingers of the right hand extended to touch the ground. पांचटा जगह आमर कोन अंगूठी टच करिवो. Buddha's enlightenment wonder, बुद्धि ट्री रे, when he summoned the earth goddess Sthavara to hear witness to his attainment of the enlightenment. तो जो टिके में के बा मतलब goddess को मतलब कहते के मतलब that message was given that symbolizes के I have attained but that enlightenment. तो that means ये तुमको कोठी देखा जबो बोध हो गया रे, है ना, कोठी देखा जबो बोध हो गया. So बोध हो गया जोटा bodhi tree, under the bodhi tree. So that was then in this posture Sakya Muni overcame the obstruction of Mara, and while meditating on the what, on truth. तो यही पोस्चर से जो मारा जो आमे कहतले कि द लॉर्ड ऑफ इल्यूजन ताको डिफीट करि परथिले, बा तांकर किछि इंपैक्ट पड़ी नथिला. Then the second ध्यानी बुद्धा जोटा कि अश्वो भया, that is depicted in this mudra. He is believed to be the transfer delusion of anger into the what, mirror like wisdom. So wisdom रे जोटा तांकर delusion को से कोन बा anger को से wisdom रे कन्वर्ट करि पाउथले, मतलब पेशेंस तांकर बहुत. देन आसबो तमरो भारता मुद्रा. भारता मुद्रा ये देखि परिबो तमे the posture again the आमे आसबा right hand मुद्रा एथरे कोन चैरिटी, कंपैशन,
बोन ग्रांटिंग तो एटा तुमको मन रखो हियर दिस इज ये तुमको पचारो के वरदा मुद्रा कौन डिनोट्स करे चैरिटी कंपैशन को डिनोट्स करे बस एतिक मन रखो to wish that is the wish to devote himself for the human salvation तो ये हमको ऐसे देखा जो जोटे कि पांचटा फिगर मीनिंग्स दिया है the five extended fingers in this mudra symbolize the following five that is the what perfection generosity morality patience effort meditative and concentration these are the मतलब different finger different जिनसों को symbolize करे combination of Abhaya and Bharata mudra is called that is the Senga that is but सेमुलिंग है ना तो ये सब किसी कीवर्ड समय देखुचे ताको खत्म कर देले देन आगो को चलिबो बाकी अंडर दिस स्पिरिचुअल गाइडेंस द डिल्यूजन से जो प्राइड को से खत्म कर देथिले प्राइड को विटनेस रे सेथरे ईगो जोटा की आमे थिला कोन दैट वाज द एंगर हियर द प्राइड को से कोन करथिले विजडम रे कनेक्ट कर देथिले नेक्स्ट आसीबो ध्यान मुद्रा हियर यू कैन सी द हैंड पोस्चर ध्यान मुद्रा केमते रहिछि गोटे हाथ गोटे हाथ ऊपर मे बी मेड विथ वन और टू बोथ हैंड्स रे तमर रहइबो एटा बोथ हैंड्स रे वन और बोथ हैंड रहि परबो सिंगल हैंड व्हेन मेड विथ ए सिंगल हैंड द लेफ्ट वन इज प्लेस्ड इन द लैप व्हाइल द राइट वन मे बी एंगेज्ड एल्सवेयर जदि गोटे हाथ रे करूछ लेफ्ट हैंड लैप रहइबो आ गोटे हैंड अदर पोजीशन रे रहइबो तो the left hand making the dhyana mudra in such cases symbolizes the female left hand, the principle of wisdom. The ritual subject such as a text are more common than alms that is the bowl symbolizing renunciation may be placed in open palm of the left hand. ध्यान मुद्रा जो तुम देखि परबो जोटा कि लेफ्ट हैंड ऊपर राइट हैंड रही थे साधारणतः यदि बोथ हैंड से परफॉर्म करिवे डिस्प्ले द दैट इज व्हाट फोर्थ ध्यानी बुद्धा दैट इज अमिताभ आल्सो नोन एज दैट इज अमितेशु ये तुम रहइबो जो थ्रेड कोन कहथले द डिल्यूजन ऑफ अटैचमेंट बिकम द विजडम एथर कोन डिल्यूजन ऑफ अटैचमेंट बिकम विजडम तो डिफरेंट मुद्रा रो ताले कोन डिफरेंट नॉलेज से ताको विजडम रे कन्वर्ट करि छंती सो विथ द हेल्प ऑफ दैट मुद्रा जदि हम देखबे ध्यान मुद्रा दैट इज मोर्टल्स अचीव टू ट्रांसफॉर्मेशन देन एज फॉर अभय मुद्रा हियर यू कैन सी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड अभय मुद्रा संस्कृत मींस fearless mudra symbolizes the protection peace and dispelling of fear खत्म करियो फियर को दैट इज द गांधार आर्ट ये कोठी देखा जे हमको गांधार आर्ट गांधार कहले जो मथुरा स्कूल अछि गांधार स्कूल अछि एगुडा में जो स्कूल ऑफ बुद्धा आर्ट मु तो इथरे नाही जदी तुमको जो शॉर्ट नोट दिया जबो सेथरे अछि है ना हेतरे कोन थाए जदी तुम कहइबो सेटा मु पढाई देबो किछ इथरे डिफिकल्टीज नाही सेतर खाली डिफरेंट पोस्चर आ कोन लेट्स से गांधार आर्ट रे तांकर बॉडी केमति थिला तांकर पोस्चर केमति थिला को स्टोन रे हेइथिला इते डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट हो जेमति हमें जगन्नाथ को के सुनाबेश कर दउचंती के चौका डोळा कर दउचंती दीज आर व्हाट डिफरेंट फॉर्म ऑफ मतलब लॉर्ड जगन्नाथ सेमति आंकु भी डिफरेंट फॉर्म रे कतले डिफरेंट स्कूल हे गेला कोन किए जगन्नाथ को सुनावेश कर किए हाथ लगे दौरान किए गोड़ लगे दौरान तो डिफरेंट फॉर्म रे जगन्नाथ को डेपिक्टेड करा जाउची तो दे आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्कूल ऑफ जगन्नाथ सेमती हमें कहि परिबा सो लाइक द डिफरेंट स्कूल थिला जोडे कि मो इथरे ऐड करिनी जेंते तमरो गांधार स्कूल सरनाथ स्कूल देन तमरो हेलेनिस्टिक स्कूल्स बुझ परछो ये सब रहिची अभय मुद्रा डिस्प्लेड बाय द फिफ्थ ध्यानी बुद्धा है ना दैट इज Amogha Siddhi. He also Lord that is the what karma in the Buddhist that is Patron. The Amogha Siddhi helps in overcoming the delusion of jealousies. तो jealousies को खत्म करूची ये that means अभय मुद्रा jealousies को खत्म करूची के रिपेल करूची jealous को है ना ताकू wisdom रे कन्वर्ट करिवो पुनी देन आसबो स्कूल ऑफ बुद्धिज्म रो तो ये थला डिफरेंट तो फर्स्ट एथे कोन खत्म कराउची अभय मुद्रा
जेलसियस को खत्म करा जाउची एथरे ध्यान मुद्रा कोन करा होची दैट इज आमे देखिबा हेल्प्स जो देखे डिल्यूजन ऑफ अटैचमेंट को आमे विजडम रे कन्वर्ट कर जाउची देन आसो भारत मुद्रा एथरे कोन करा होची दैट इज प्राइड बिकम विजडम देन भूमि स्पर्श जोटा कि एंगर टाको आमे नॉलेज रे कन्वर्ट करिबा सो लाइक दिस ऑल द मुद्रास डिस्कस हे गला देन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म रे आसबा जेंति कि महायाना एंड हिनायना ये तो हमें देखिथिले ना केबे फोर्थ काउंसिल रु तमरा डिवाइड हितला जोटा कि हमर कुसाना टाइम रे हितला कुंडल जोटा कि सॉरी इट वाज व्हाट व्हिच बनो कोन थिला से बनो ना चलो हाँ तो बुझबछ एथरे हम देखिबा एथरे सेपरेट हितले जोटा कि महायाना एंड हिनायना महायाना हिनायना तो मु कहि देथली ना जो थ्रे के लिटरली मीन्स द व्हाट द ग्रेट व्हीकल्स महायाना एथरे एक्चुअली बुद्धा को महान बा गॉड बोली कहा जाए एथरे देखो कोन लिखा हितला हैवीनेस दैट इज द हैवी व्हाट हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा आइडल वर्शिप करा जिवो मु तुमको ऑलरेडी कहिची है ना तो एथरे आइडल वर्शिप करा जिवो इमेजेस बना जिवो ये कोठी देखा जिवो तुमको तमती नॉर्थ इंडिया रे कश्मीर ए सब रीजन रे तुमको देखा छ दिस आर द रीजन ए सब साधारणतः दुनिया रे जदी तुमको पचरा जिवो के को सेक्ट बुद्धिस्ट अधिक ये महायाना सेक्ट अधिक हिनायाना बहुत कम लेजर vehicles एमाने कोन करंती abandon the what that is the vehicles of the defective wills believe the original teaching of the buddha the doctrines of elders एथरे मतलब not believe in idol worship already हम याको डिस्कस करि चलते एमाने बिलीव करंती कि बुद्धा जन ह्यूमन थिले सुपर मतलब एल्डर सेतमेले कि एल्डर डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर से हमठु ओल्ड थिले मत नॉलेजियस थिले बट ह्यूमन थिले एमाने कोनते ना ही वाज यूज्ड टू बी द गॉड तो सेति माने आइडल प्रैक्टिसेस करन तल दुनिया रे वर्तमान जदी हम देखबा महायाना र संख्या अधिक हिनायाना र संख्या कम प्रत्येक मतलब रिलीजन विद इन द हम कहबा डिवीजन हेछि देन theravada ancient branch of the buddhism today हम देखबा माने दैट इज एथरे कोन करंती द क्लोजेस्ट ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा अछि Theravada Buddhism developed in Sri Lanka. That's बहुत important. Sri Lanka news review economic crisis. Also, the national emergency has been imposed. Even the suit and site भी दिया जाइए. Subsequently, spread of the rest of the Southeast Asia को आसी Theravada. Dominant form of religion Cambodia, Laos, Myanmar, Sri Lanka, Thailand. ए region रे Theravada देखा जाए. Then Vajrayana. थंडरबोल्ट जाको कहा द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट आल्सो नोन एज द तांत्रिक बुद्धिज्म टाइबेट रे देखा जाए ये कोठी देखा जो तुमको बुद्धिज्म स्कूल डेवलप्ड इन इंडिया साधारणतः ये टाइबेट रे देखा जाए अधिक टिके मन रखि देबो दो ये टाइबेट बेसिकली पैट्रोनाइज करते वज्रयाना जोटा कि तांत्रिक बुद्धिज्म है ना देन जैन is a school of Mahayana Buddhism that originated in China. Jain the Tang dynasty of Chang school Chinese Buddhism later developed a various school को कहता है सेगड़ा किसी दरकार नहीं जापान रे इवी मध्य देखा जाए so these are the different Vajrayana जोटा कि तांत्रिक बुद्धिज्म then Theravada original Sri Lanka then Mahayana Hinayana fourth council ये सब वर्ल्ड देख जाए spread of Buddhism बाकी मु संग वगैरह पढ़ौनी केने से बहुत डिटेल रही जो संगर प्रॉब्लम कोन थिला केते संग कोन करूथले सेमानकर मीटिंग केमथि हेतला मानसून सीजन रे से माने कोन करूथले तो एमति बहुत सारा जिंस होची ता भीतर भीतर सेटा बहुत मतलब ऑप्शनल दरकार एते सब एते डेप्थ रे तो दरकार नहीं हना सेति भाई मु आ से संग वगैरह पढ़ौनी तुम मन को स्लाइड रे इंक्लूड करा जायनी संगर फंक्शन के ग्लिम्स कर दो ना दे नहीं संगटा होची कोन गोटे ग्रुप ऑफ मॉन्क्स संघ जोटा थाए गोटे ग्रुप ऑफ जोठे मॉन्क्स एंड नॉन्स आसंती से माने कोन करिवे वर्ष सारा बुलिबे मानसून सीजन रे दे यूज टू स्टे इन द वर्ट रेजिडेंट तापरे आसीबे वर्ष सारा आसिला परे जस्ट ओके खाली संग टिके मु कहि दोची देन वी विल गो टू द संग कोन थिला
फास्ट आम बुद्धार जो आम कहते द 3 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग गोटे कौन थिला ना बुद्धा गोटे थिला कौन नेक्स्ट व्हाट वाज दैट बुद्धा Dhamma. the हाँ Dhamma. धामा एंड व्हाट संघ दैट इज द Sangha. एल्डर्स ना संघ कौन थिला प्रथम कथा होची संघ होची कौन जो एल्डर्स माने जो टीचर्स माने माने जो नॉन दैट मे बी ए नॉन हे पारे किबा गोटे मॉन्क हे पारे से माने कोन करे ओंडर करबे डिफरेंट प्लेसेस को जिवे तो कोन करिया पे ना फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म है ना से नॉलेज बा केमिति ट्रू नॉलेज लोकों पाखरे पहुंचबो से माने वर्ष सारा बुलीबे मॉनसून सीजन रे दे विल कम बैक तांकर गोटे जो जो पर्टिकुलर गोटे प्लेस अच्छी सेठी आसी जिवे सेठी से रहिबे 3 मास है ना से 3 मास मॉनसून सरी गला पर पुणी से निज निज यात्रा रे बाहरिबे एई जो 3 मास से गेट टुगेदर करंती गोटे जगह रे रहंती आउ जे जहा भूल करि थांती सेठी प्रायश्चित करंती बुझ पछो जार जहाँ भी भूल करती से स्वीकार करती कि हाँ ये गोड़ा आम यही सब भूल करूँ तो ताकू सेटा तार स्पेशली कौन थाए पनिशमेंट थाए बट जदि जड़े प्लीज म्यूट योर माइक सो दैट द अनवांटेड वॉइस विल नॉट कम सो संग जोटा मु कहती से माने कोन करती निजो को मतलब रियलाइज करन जे हां दिस आर द व्हाट मिस्टेक्स वी हैव कमिटेड लाइक दिस तो तांको भीतर सेटा डिबेट हुई मई दे जार काम रे बाहरी पड़ंती अगेन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हमें देखिबा तो monks जोटा की दैट इज व्हाट भिक्षु and lay the worshippers that is the upasikas etic manko monks were organized into the sangha mu to jo कहथि for the purpose of the spread of teaching आउ टिके पूर्व कहथि संघ मान को पठा थाए से माने जिबे डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करिवे ता द्वारा तांकर डिसाइपल्स मान को नुआ नुआ डिसाइपल्स तांकर बनिबे न्यू आसीबे सेथरे ओल्ड आसीबे न्यू मान को माने ओल्डर माने एल्डर्स माने केमती तांको टीचिंग देबे तांको सिखेबे एसु Sangha Buddhism made rapid progress in the north and I mean even the Buddha's lifetime. After the Buddha's death, for followers transferred on their path of meditation and roamed throughout the countryside. So what do you believe? 200 years Buddhism remained overshadowed by the Hindu counterparts until the advent of great Mauryan king Asoka. Asoka से spread अधिक करो because he was the patronizer of what obviously the Buddhism. तेणु अशोका आसला पर सडनली कौन हो स्प्रेड अधिक हो कारण अशोका जमी तुम जान काम्बोडिया हो लाओस हो श्रीलंका वगैरह कौन कर जो मंक मान को पठेब है ना से अशोक आसला पर जो आम कह जो स्प्रेडटा बहुत फास्ट हो कलिंग को कनक्वेस्ट करला कलिंग को भी आसी बुद्धिज्म से आमर देखो जो ललितगिरी रत्नगिरी उदयगिरी अच्छी जाजपुर से कौन बुद्धिस्ट साइट है ना यहाँ हूँ गोल्डन ट्रायंगल से हूँ डायमंड ट्रायंगल ना जान आमर है ना आमर दीटा ट्रायंगल अच्छे ना जोटा पुरी कोणार्क लिंगराज एला आमर कौन गोल्डन ट्रायंगल डायमंड ट्रायंगल हूँ कौन जोटा मुझे कहली उदयगिरी ललितगिरी जो अच्छी रत्नगिरी जो तुम बुद्धिस्ट साइट अच्छी से ठीक कहूँ तो ना तो से गुड़ा टिके मन रख तो नेक्स्ट आम देखा तो दैट इज मौर्यन किंग अशोका जो आसीगले फाइनाली आज ही वाज ए पैट्रोनाइजर द ग्रेट रूलर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जदि लैंड रो देखो से ओबियसली मुझे तो कही जिते व्हेन एवर द हिस्ट्री हैज गॉट द स्ट्रॉन्ग पर्सन दैट विल चेंज विल समथिंग विल हैपेंस सो ये अशोका टाइम रे भी चेंज होता तो बुद्धिस्ट काउंसिल भी से करते बुझिपार थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जमती देख म्यांमार इजिप्ट थाईलैंड ये सब श्रीलंका वगैरह वेरियस बुद्धिस्ट काउंसिल सब मतलब बुद्धिस्ट
monk मान को पठा जायतला for the spread of like that even silent जोटा श्रीलंका तमे कहउछ that time it was a silent reason for the what's reason for the spread and popularity of Buddhism कौन थिला ये सब तो क्वेश्चन पचारि बने प्रिलिम रे या तो मेंस क्वेश्चन लिबरल थिला डेमोक्रेटिक थिला एमते नै कि काको someone was compelled or forced to take that particular religion नै तमको ही करियर अछि एमते नथिला it was liberal and democratic it was choice on the people of that particular region whether they will go for the Buddhism or they will else adopt any other sort of religion एमते काको फोर्सफुली करा जाउ नथला एमती लोभ देखिए कि एमती किछि नथिला बिकॉज से तो कहितले ना किछि लोभ माया ए सब रहिबो नाही सिंपल लैंग्वेज थिला है ना पाली लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज थिला पाली होची कॉमन मैन रो लैंग्वेज संस्कृत होची हायर क्लास रो लैंग्वेज तांचे मन रखो बुद्धिज्म स्प्रेड हबार गोटे बहुत ही बड़ रीजन थिला पाली लैंग्वेज अगेन आई रिपीट जदि तुमको पचारिबो कोन पई बुद्धिज्म एते फास्ट रैपिडली मूव करूथला to the nook and corner of the villages and the countryside because of the Pali language but later on जेतेबेले संस्कृत लैंग्वेज को एमाने अडॉप्ट करिवे लोक बुझी परिबे नाही सेथि पई एलिट क्लास मध्य रे कोन रहिबो बुद्धिज्म डेवलप करिवो एंड लोअर क्लास रे बुद्धिज्म खत्म होवा को लागिवो बिकॉज ऑफ द संस्कृत as they will change later they will change so that am देखो so buddhism spread the message in the language of the masses that is the common man language ताको पाली को आजे स्पोकन लैंग्वेज थिला दैट मीन्स वैदिक रिलीजन तापरे धीरे धीरे संस्कृत आसीबो संस्कृत आसीगला पर कोन हिजबो ना बुद्धिज्म ता खत्म होबो है ना एटा हम देखबा डिक्लाइन को जिबा पर्सनालिटी ऑफ द बुद्ध ऑब्वियसली इट वाज he was a very kind person है ना enlightened person तांकर सेमते किछि ईगो नथला there was no hope there was no मतलब I would say like desire नथला रॉयल पैट्रोनेज माने कोन जेमते कनिष्क अशोका बिंबिसारा ए सब कोन रॉयल लोक ना किंगडम आ जति ए माने पैट्रोनाइज करूछथि दैट मीन्स द कॉमन पीपल बाउंड टू फॉलो द पाथ isn't it सेति पई कहै छै ना अशोका बडिया रूलर जेतरा बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करूछथि ऑब्वियसली द फॉलोअर आर द किंगडम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ अशोका इज आर हैड टू फॉलो दैट फेथ एज वेल इनएक्सपेंसिव एथरे आइडल वगैरह तो दरकार नहीं ना Let's say no need to go for the idol. It was not compulsion to have the idol in your home for the practicing of the Buddhism. There was no such of impulsion was restricted. है ना एमते किसी नथला तादरा इनएक्सपेंसिव थिला रॉयल पैट्रोनेज थिला पर्सनालिटी ऑफ बुद्ध हिमसेल्फ इगोलेस थिले एते पई ये सब ऑल टुगेदर हम कहबा लैंग्वेज कथा नै जो लिबरल डेमोक्रेटिक थिला एंड रियल ट्रुथ कहउथिले से जेमति कहले कि मतलब दुखर कारण कोन दुख को केमती विनाश करा जिवो डिजायर को केमती हम खत्म करबा जो एट फोल्ड पाथ देन हम एसवा रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म डिक्लेयर केमती कला करप्शन इन द बुद्धिस्ट संघ ये संघ माने कोन कले ना ए माने धीरे धीरे दे मूव टुवर्ड्स द लग्जरी लाइफ एंड एन्जॉयमेंट जाकू बुद्धा नीचे मना करथले दे स्टार्टेड टू टेकिंग द गिफ्ट है ना वैल्यूएबल गिफ्ट्स नवा स्टार्ट कले मतलब धीरे धीरे मैटेरियलिस्टिक हे गले जाकू बुद्धा निजे मना करथले अदरवाइज ही कुड हैव लेड ए व्हाट वेल मैटेरियलिस्टिक लाइफ as he was belongs to a but king family है ना but he quitted all that things in search of the real truth है ना so but ये माने कोन कले धीरे धीरे गिफ्ट नवा स्टार्ट कले लग्जरी लाइफ एन्जॉयमेंट कले जहां भी सब प्रिंसिपल थिले ताको खत्म कर देले जो मंक माने तादर कोन बुद्धिस्ट मंक्स माने सेति पई धीरे धीरे लोक देखिले कि यार डिग्रेडेशन हबो ही हबो डिविजन ऑफ बुद्धिस्ट जेमति हमें हिमायना महायाना वज्रायना बुझबो ये सब हमें देखिले देखा तादर कोन होची ओरिजिनलिटी लूज ऑफ इट्स ओरिजिनलिटी ताको भी हमें खत्म कर दे देन यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज आउट के पूर्व कहउथले पाली लैंग्वेज जगह संस्कृत यूज कलो तो तादर कॉमन लोक बुझी परिबेनी ना कोन होची मतलब रीजन इट वाज फॉलो बुद्धिज्म वन ऑफ द मेन रीजन थिला बिकम वन ऑफ द many reason for the fall of Buddhism जति हम देखा बुद्धिज्म रो फॉल हबारो संस्कृत लैंग्वेज दैट इज डिविजन निज भीतर कॉन्फ्लिक्ट हबो वज्रायना तंत्रयाना बुझबरछ नै तो ये सब तुमको भीतर आसीबो देन बुद्धा वर्शिप बुद्धा तो कहतले निज को कि मते वर्शिप करबनी तो तांकर आइडल वगैरह बुझबरछ नै तादर वर्शिप कला माने पुणी से ब्राह्मण आसीबो एबे जेतरो तमे वर्शिप करूचो बुद्धा को आइडल प्रैक्टिसेस करूचो इमेज करा जाउची सो दैट अगेन दैट व्हाट जो ब्राह्मण क्लास तो अगेन आसीबो ना रिचुअल पुणी आसीबो ना तो तार रिचुअल तो से खत्म करिया पिन चाहतले सेता चाहतले ब्राह्मण क्लास रो डोमिनेंस को खत्म करे पुणी आसी जिवो देन प्रोसिक्यूशन ऑफ द बुद्धिस्ट है ना
द कोर्स ऑफ टाइम्स राइज दैट इज द ब्राह्मणिकल गिफ्ट अगेन आम देखा धीरे 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 ब्राह्मण्स मान आसीज प्लस प्रोसिक्यूशन ऑफ द बुद्धिस्ट कहले कौन ना जो आमर हिंदुइज्म आसीगला एमाने तो बुद्धिस्ट मान को कौन कला टर्चर करागला बुझिपार प्रोसिक्यूशन ऑफ द बुद्धिस्ट कारण आमर जो ब्राह्मण्स रूलर माने थिले जेमति पुष्यपुत्र शुंग ऑफ हुन किंग एमाने कौन कले ना एमाने शिवा को वर्शिप करुथले बुझिपार ना लॉर्ड शिवा तो सो दैट से माने केबे बुद्धिस्ट मंक मान को सपोर्ट करिवे नहीं ता द्वारा धीरे धीरे अदर जेतरा हमर लॉर्ड शिवा लॉर्ड विष्णु जेतरा आसीगले हिंदुइज्म रो अशोका परे परे पुनी हिंदुइज्म रिवाइव करिवो सो दैट ए माने को कोन करिवो प्रोसिक्यूटेड करा जिवो दे विल बी माइनॉरिटी हे जिवो ना बुझा पड़िबो नै एटा बुझा पड़िबो ना समस्त को होप मुस्लिम इन्वेजन ए बहुत इंपोर्टेंट मुस्लिम इन्वेजन अब ये माने तो सब खत्म कर देले सो दैट ए माने कोन असलुम नेले दे फ्लेड फ्रॉम इंडिया फॉर द शेल्टर ऑफ नेपाल एंड टाइबेट से तो इंडिया रू भागी पड़े गले कारण इंडिया रे जतरा मुस्लिम माने आसिक रूल स्टार्ट कले से माने सब मोनास्ट्री को खत्म कर देले सब बुद्धिस्ट टेक्स्ट को जाली की पोड़ी देले बिकॉज दे वर जेलसियस ऑफ दिस व्हाट बुद्धिज्म से माने कहले कारण देखो मुस्लिम आउ क्रिश्चियन मानकर तांकर प्रिंसिपल होची दे वांट टू इंक्रीज देयर रिलीजियस प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड सब तांको भीतर कंपटीशन चलची बट बुद्धिज्म एमती किछि कंपटीशन नथिला ना बुझा पड़िबनी सो ओवरऑल हम कहबा मुस्लिम इन्वेजन वाज वन ऑफ द कॉज क्यूमुलेटिवली हम कहबा दैट लेड टू द एंड नुआ नुआ आसिला जेमती मु कहबा मुस्लिम रिलीजन आसिला क्रिश्चियनिटी आसिला हिंदुइज्म इते रिलीजन आसिला पर ऑब्वियसली वेटेज कमी जिवो लोक माने डाइवर्स होई जिवे पैट्रोनाइज कमी गला दिस इज ऑल अबाउट द बुद्धिज्म काले में जैनिज्म पढ़िबा होप दिस लेसन वाज इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू है ना।